Hello friends, welcome to this lecture of TOC. As I discussed the concept of token, alphabet and word in my previous lecture, today I will focus on the other concepts associated with the word. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सबके साथ डिस्कस किया था टोकन, अल्फ़ाबेट और वर्ड, आज के लेक्चर में मैं वर्ड से एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बतलाना चाहूँगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम किस तरीके से किसी वर्ड का लेंथ निकाल सकते हैं। So let us consider an alphabet 1 defined over AB. So the word we can have is W1, and we can have the length of this W1 as 4. So when we talk about the length of a word, we basically count the number of alphabets contained in it. So we can simply observe that there are 4 alphabets in this string. We have the length of this string as 4. जब भी हम बात किसी भी वर्ड या स्ट्रिंग के लेंथ की करते हैं तो हम हमेशा उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसको काउंट करते हैं और वही नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आपका लेंथ उस वर्ड के लिए हो जाता है। सो सिमिलरली वी कैन हैव दिस स्ट्रिंग आल्सो एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग वुड बी 6। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वर्ड में भी आप जब अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट्स होंगे। सो इस तरीके से इसका भी लेंथ 6 हो जाएगा। So another concept that we have to understand under the length of the string is a fundamental string. And when we talk about the fundamental string, it is basically represented by lambda. जब भी हम बात फंडामेंटल स्ट्रिंग की करते हैं तो फंडामेंटल स्ट्रिंग को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कभी-कभी हम नल भी कहते हैं और यही नल किसी भी लैंग्वेज से ग्रामर को प्रोड्यूस करने के दौरान यूज होता है। सो इसके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। दिस लैम्डा इज बेसिकली यूज्ड टू डिराइव ग्रामर फ्रॉम अ गिवन लैंग्वेज एंड व्हेन वी मूव टू दिस कॉन्सेप्ट when we will come to this concept of producing the grammar, we will discuss more about the lambda in that lecture. So what could be the length of lambda? So the length of lambda is basically 0. And the other concepts that we have to associate, we have to discuss here is what could be the length of W0? So that is basically lambda. And what could be we can have W and we can find the length of W square as W into W
So this is a very important observation that we have to understand. So these are the important observations that we have to keep in our mind. हमें इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखना होगा बिकॉज ये कई बार पूछे जाते हैं. इसके अलावा अगर हम लैम्डा और W को इस तरीके से रिलेट करें तो हमें हमेशा W मिलेगा. ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है. So all these are the important observations that you have to keep in your mind. Let us now move to the another concept associated with word. So the second concept is concatenation of a string. This concatenation operation is basically similar to that we discuss, similar to the concept that we basically consider under computer language. Computer language में जो हम concatenation operation की बात करते हैं वो उसको समझने की शुरुआत यहीं से होती है. So if I consider an alphabet as and if I can have the word as ABBA and ABAB. So if I concatenate these two strings, I will obtain and if I change the order of the concatenation of the string, I will obtain. So we can simply conclude that W1 dot W2 can never equal to W2 dot W1. So हम यहाँ देख सकते हैं कि W1 और W2 और W2 और W1 कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे. लेकिन अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो हमें ये रिलेशन मिलेगा और ये रिलेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक चीज हमें यहाँ समझना होगा कि अगर हमें इन दोनों को बराबर लेना है तो इसके लिए हमें ये कंसीडर करना होगा. So W1 और W2 और W2 और डॉट W1 तभी एक दूसरे के बराबर होंगे जब W1 W2 के बराबर हो. और ऐसे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. तो हमें इन ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान में रखना होगा. तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है reversal of a string. The next concept which is very important to understand is a reversal of string. So if I consider the alphabet
to be defined over 0 and 1, and if I consider a word as 0 1 1 0 1, so what could be the reversal of this string? This could be this one. And if I also take another example as W2 to be so this, the reversal of this operation would become this thing. So this is a reversal of string. So the next concept that we have to understand is the concept of palindrome. अगला concept जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है palindrome, क्योंकि palindrome काफ़ी important रोल प्ले करता है context free grammar के understanding के दौरान. Palindrome lays a very important concept, lays a very important fact while understanding context free grammar. So what basically the palindrome? Palindrome is basically that if a string is if a string is equal to as that of its reversal, then that concept basically is known as, then such string is basically palindrome. Example, if I have a string like 10101 and if I reverse this string, we can observe we have the same result. So the idea is when W becomes equal to W, it's a WR, that is its reversal, it is basically known as palindrome. So it is the concept of palindrome. I think most of the programmers are very well aware in computer language. So palindrome can be of two types. One is even palindrome. So when we say even palindrome, that simply means the length of the string and the reversal of the string is always let us check that this is in size this way. What is basically the even palindrome? So we can consider it that when the length of the string and its reversal is even, it is basically considered as a even palindrome. And what is the odd palindrome? So if the string and its reversal has a length of odd, then it is known as odd palindrome. So this is again an important observation. So this is about the reversal of string. Let us understand another concept, that is the concatenation operation over the string. अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है कि स्ट्रिंग को अगर हम कॉन्कैटिनेट करें तो क्या होगा, और ये हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. हम किस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं. वी हैव ऑब्जर्व दैट हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. Secondly, we have discussed how we can find concatenation of string, and we have talked about the concept of reversal of a string.
तो अभी तक हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं जो कि स्ट्रिंग से सीधा सीधा एसोसिएटेड है. Let us now move to the another concept which is basically the grammar. But before moving to the grammar, we have to make sure that what is basically the language. I think it is very, it listens to be awkward, but we have to discuss the language before the grammar. ये सुनकर आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि हम यहाँ पर लैंग्वेज को पहले डिस्कस करना चाहते हैं ग्रामर से पहले, और वो देखते हैं वो क्यों इतना ज़रूरी है. So what is basically the language? Before that, let us talk about universal language. Universal language. And universal language is represented by sigma, and we have star. And this star is very important because this star is known as Kleene closure, or sometimes Kleene star. It lays the foundation of the formation of grammar and language in TOC. So let us understand what basically this universal language is. So universal language is basically a collection of strings along with Kleene star. So Kleene star basically sometimes represents null, or we had talked about lambda. So basically universal language is a collection of all possible strings along with lambda. So if I take an alphabet as AB, so what could be the universal language? So universal language would be first the null. The first thing that is considered in universal language is null. That comes from this Kleene star. So that is the importance of the Kleene star, that it leads to the production of lambda as a first string. And then we have A, B. This is a string. This is a fundamental string we can obtain from here. And besides that, I can have all possible string that we can form from this alphabet, and this can be AB or BA. ABBA, BAAB, ABA, BAA, ABB, and so on. So basically, when we talk about the sigma star, that is the universal language, it means all possible collection of the string along with this lambda. जब भी हम बात यूनिवर्सल लैंग्वेज की करते हैं तो हमें समझना ये होता है कि यहाँ पर जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग आप बना सकते हैं किसी भी दिए गए अल्फाबेट से, उसके साथ साथ आपको लैम्डा कंसीडर करना होगा अगर हमें यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर्म करना है. तो यूनिवर्सल लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग टेकन अलोंग विद दिस लैम्डा. There is another concept that is called the lambda plus, and lambda plus is basically obtained when we omit this lambda. एक बात और समझना आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि हम एक सिग्मा स्टार कॉन्सेप्ट भी लेकर चलते हैं जो कि ऑब्टेन होता है जब भी हम इसमें से लैम्डा को हटा दें, और लैम्डा को हटाने के बाद हमारा कंसेप्ट कुछ इस तरीके से, हमारा लैंग्वेज कुछ इस तरीके से बन जाएगा. So you can understand that when I omit this lambda from Kleene star, we obtain sigma plus as somewhat like this. So we can relate these two things as fine or this thing.
And this is basically the very important relationship that can be asked during interviews, entrance tests or exams. So very important concept that we have discussed so far, that is called the universal language. I just want to revise it along with you, that when we talk about universal language,